आज मैं आप लोगों के साथ यूनाइटेड नेशंस की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके गाइडलाइंस हैं उसको डिस्कस करना चाहूँगी. As we know that the United Nations guidelines presently which exist is of 2016. But prior to that, there were also certain guidelines which have been adopted by the United Nations General Assembly in April 1985. And after that 1985 April guidelines, these guidelines were further expanded by the Economic and Social Council in July 1999. And these revised and adopted guidelines were further adopted by the General Assembly in December 2015. So presently we have the December 2015 guidelines for the protection of the rights of the consumer, which are known as the UN guidelines on consumer protection 2016. जब हम इन गाइडलाइंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. The first part is related to the objectives of these guidelines as to why and how these guidelines are issued. Then the scope of application, कि कहाँ पर ये guidelines लागू होंगी, उसका scope क्या है. Then there are certain general principles also on the basis of which these guidelines have been made. The next part of these guidelines is providing for the principles for good business practices, कि वो क्या principles हैं जिससे कि business practice में लागू किया जाना चाहिए. And then the fifth part is consisting of the guidelines. Then next two parts which are related to the international cooperation and international institutional machinery that is required for the redressal of the consumer rights. तो ये जो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो गाइडलाइंस हैं उनके राइट्स को सेव करने के लिए, उनको रेमेडी देने के लिए, तो दीज गाइडलाइंस वर इश्यूड in 2016. So today I will be focusing only on the objective of the UN guidelines, then the scope of application and the general principles. The rest of the provisions I will be discussing in my next lecture. Okay. So the first of all, when we see the objective, कि क्यों issue की गई हैं, what is the objective of these guidelines, then we find that these United Nations guidelines for the consumer protection, they are said to be a valuable set of principles. A valuable set in the sense that it is having certain good characteristics. That is the relating to the effective consumer protection, कि किस तरीके से consumers को protect किया जाए, how it has to be protected effectively. So uske liye jo objective hai, that is, it has to be done by the legislation, it has to be enforced by the institutions through the redressal system. तो ये जो guidelines दी गई हैं, these are known as the valuable set of principles, and for this objective the guidelines have been issued. Further, we see that the guidelines are to assist the interested member states in formulating or in making the laws at their domestic places, like municipal laws are to be enacted by the state parties, and those domestic laws are to be enforced also. Then there are certain regional laws also, some rules, regulations, and other suitable provisions are to be made by the state parties. So the objective is just to protect the rights of the consumer, कि consumer के जो rights हैं उनको कैसे protect किया जाए, और जो main characteristic है इसकी वो ये कि effectively उसको कैसे किया जाए. तो effectively करने के लिए it is required that there must be certain legislations which can be enforced by the institutions through its redressal system. Then after making all these laws at the domestic level through laws, rules, regulations, because as student of law you are aware that the law can be in the shape of the rules, regulations as per article 13 of the constitution of India, because law includes all these things. तो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाना जरूरी है विच में बी एप्लीकेबल and which may give the effective remedy to the consumers for the protection of their rights. And for that,
the cooperation among the member states is very important, and they are to be encouraged for sharing their experiences for the consumer protection. If one state is having such law, then it can be shared with the others also. So with this objective, these guidelines have been issued particularly in 2016, and the basic points which are related to these guidelines under this objective clause is that the United Nations desires to assist the countries, the member states, so that they may achieve or they may maintain the adequate protection for their population as the consumer. कि उनके स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, दे आर द कंज्यूमर्स, तो उनको किस तरीके से एक प्रोटेक्शन दिया जा सके, वो कैसे उस प्रोटेक्शन को अचीव कर सके, इसके लिए ये गाइडलाइंस इशू किए गए. साथ ही साथ टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑल्सो विच आर रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स, कि जिस तरीके से कंज्यूमर को ज़रूरत है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उस प्रोडक्शन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, इस सब को लेकर भी नियम बनाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं. Then another objective of these guidelines is just to encourage high levels of ethical conduct for those who are engaged in the production and distribution of the goods and services to the consumers. कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी आइटम को, किसी गुड्स को, या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को ये जरूरी है कि जो इनका कंडक्ट है वो बड़ा एथिकल होना चाहिए. So high level of ethical conduct is to be encouraged in the production and distribution of the goods and services for the consumer, so that less and less grievances may be there. Then another objective under this guidelines is that to assist the countries in just to control and to curb the abusive business practices by all the enterprises, whether it is at the national level or at the international level, which is affecting the consumers. Rather, I should say, which is adversely affecting the consumer. So this is one of the objective, that the assistance is very much important, which may curb, which may control abusive business practices. कि कोई इस तरीके की business practices कर रहे हैं जो बड़े बड़े enterprises हैं, चाहे वो national level पे हो या वो international level पर हो, उनको इस तरीके की practices नहीं करनी चाहिए जिससे कि consumer affect हो रहा है adversely. तो ये भी एक objective है, इस objective को लेकर ये guidelines issue किए गए हैं. Further, another objective is that to facilitate the development of independent consumer groups also. Like you see कि internationally बहुत से organizations हैं, consumer international है. जैसे हम करते हैं बात राइट टू इन्फॉर्मेशन में, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. ह्यूमन राइट्स के लिए देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या इसी तरीके से और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. नेशनल लेवल पे एनजीओज काम करते हैं फॉर द बेनिफिट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द कॉमन मैन. Similarly, the objective of these guidelines is also to facilitate the development of independent consumer groups. कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप जो इंडिपेंडेंटली बनेंगे, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफ ऑल ऑफ द कंज्यूमर्स, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए. दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव. एंड टू फर्दर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इससे क्या होगा कि एक इंटरनेशनल अरेना में भी जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेवल प्लेइंग दिया जाए, सो दैट their rights may be protected. And another objective is to encourage the development of the market conditions. जो हमारी मार्केट कंडीशंस हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए एनकरेज करना इसका ऑब्जेक्टिव है, so that the consumers may have the greater choice at a lower price. एक मार्केट, ओपन मार्केट वेयर कॉम्पिटिशंस में भी देयर, तो मार्केट कंडीशंस इस तरीके से डेवलप किए जाए कि the consumer may have the choice as to what he or she wants to purchase at a lower price. So that should be open. So for that, the encouragement is to be made for the developing of such a market where these type of the facilities may be given to the consumers.
and then to promote the sustainable consumption. कि कोई भी आइटम ऐसा है, कोई भी गुड्स इस तरीके का हो, सो दैट इट मे बी प्रमोटेड फॉर ए सस्टेनेबिलिटी, कि उसको सस्टेन किया जा सके उसके कंजम्पशन को. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द objective of these guidelines. So on the basis of these objectives, the scope of application of these guidelines is also defined under these guidelines. So when we see that what is the scope of the application of these guidelines, then we find that these guidelines apply to business to consumer transactions. When I say that business to consumer transaction, then it simply sets the consumer to consumer transaction, sale, resale. So these guidelines are applicable only from business to consumer transaction, number one. And at the same time, it is also including the provisions for the goods and services by state-owned enterprises to the consumers. As we know that many of the states, they are known as the welfare state, and there are public enterprises, public undertakings, many of the companies are there. And as a consumer, everybody purchases, everybody is taking the things from there. So it is not confined only from a private businessman or private business company to the consumer, but it is also including these guidelines, is also having the scope. ये जो स्कोप है इसका एप्लीकेशन का, ये गवर्नमेंट कंपनीज का जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उन पर भी लागू होगा. उनसे भी अगर कोई कंज्यूमर चीज लेता है तो उस पर भी लागू किया जाएगा. So scope is two-sided. One, business to consumer. Second, state enterprises to the consumers. But it is not applicable from consumer to consumer. कि एक कंज्यूमर ने कोई चीज किसी बिजनेस से खरीदी या स्टेट ओनर ओन एंटरप्राइजेस से खरीदी और उसके बाद फर्दर उसको सेल किया, रीसेल, so it is not applicable for that. And for the purpose of these guidelines, this consumer protection policies, these includes the laws, regulations, rules, frameworks, procedures, decisions of the proper courts, and any of the mechanism through which the member state so desires. And the private sector standards are also included in the recommendations and the protection of the consumer rights and the interest to promote the consumer welfare. तो जो इस गाइडलाइंस का जो स्कोप है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा. तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स होने जरूरी हैं, कुछ रेगुलेशंस होने जरूरी हैं. अगर उनका वायलेशन होगा तभी इसका एप्लीकेशन होगा इन गाइडलाइंस का. तो वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉर्म करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, इट इज रिक्वायर्ड दैट the consumer protection policies are to be made, and that policies may be either in the shape of the laws, in the shape of the regulations, rules, because as we know that article 13 of the constitution of India includes law with the rules, regulations, ordinance, notifications, etc etc. तो उस तरीके से जो भी नियम बनाए जाएंगे स्टेट पार्टीज के द्वारा, मेंबर स्टेट्स के द्वारा, so all these are going to be applicable to protect the rights of the consumers and the interest of the consumers, to promote the consumer welfare. Further, under these guidelines, the scope is also given that who shall be a consumer. Consumer कौन होगा? कि जब हम redressal की बात करते हैं कि किसी भी consumer को redressal दिया जाएगा in case of the violation of the right. So the first stage is that to decide that who is a consumer. And for the purpose of these guidelines, the term consumer is defined like it refers to a natural person. जो हम natural born person की बात करते हैं, तो a consumer is said to be a natural born person or a natural person. That means these guidelines are not applicable on the legal person. These guidelines are not applicable for the entities or the legal entities on which the personality is conferred. As a jurisprudential aspect, you may be aware कि personality confer की जाती है, legal personality. So it is not like that. The consumer here means only natural person, and regardless of the nationality, because these are the universal guidelines from the United Nations at the international level. So
उसमें नेशनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिकॉज नेशनैलिटी की जब हम बात करते हैं देन इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द ई परचेजेस, ई कॉमर्स। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स को बहुत बढ़ावा मिला है। वी डू नॉट नो कि हम कहाँ से सामान परचेज कर रहे हैं। कई बार हम अमेजोन से सामान अपना ऑर्डर करते हैं और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अपना सामान ऑर्डर करते हैं, कुछ विदेशी कंपनी का सामान होता है। तो irrespective of the nationality, irrespective of the other things, these guidelines are made to be applicable to the consumers who are natural born persons and who are purchasing or who are taking the things, who are acting primarily for the personal use, for the family use or for the household purposes. Consumer वो होगा जो नेचुरल बॉर्न है, प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो है। उसमें ये नहीं देखा जाना है कि वो किस नेशनैलिटी का है, कौन से नेशन को बिलोंग करता है, उसकी सिटीजनशिप कहाँ की है। और साथ ही साथ वो जो सामान परचेज कर रहा है जिसके लिए उसको कंज्यूमर माना जा रहा है, वो सामान मुख्यतः उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी फैमिली या अपने घर बार के पर्पज से खरीदा हुआ है। सो इट सिंपली मीन्स दैट द items or the goods which have been purchased for the commercial purposes, those are not coming within the scope of this guidelines application. So while recognizing that the member state may adopt these guidelines, these guidelines also give a liberty to the member states that they may give a different definition of the consumer to address the specific domestic needs. क्योंकि ये तो एक यूनिफॉर्म लेवल पे इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनी हुई हैं और हर स्टेट के अपने एक स्पेसिफिक नीड्स हो सकते हैं। तो इसी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन में ये भी प्रोवाइड किया गया है दैट if the member state so desire then they can also adopt a different definition for the term consumer so as to address the specific domestic needs कि उनके अपने देश की क्या ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस करने के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों को एड्रेस करने के लिए they can differ the definition also. So they may include in the consumer the legal person also, they may include the in the term consumer those items which are used for the commercial purpose also. But in many of the countries this definition is not further expanded. Then the third clause of these guidelines are relating to the general principles. When we see the general principles in these guidelines, then we find that the member states, जब हम international level पे बात करते हैं तो member states here is not like UP, MP, Bihar. States here are known as the independent nations, countries. So member states should develop, strengthen or maintain a स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी। ये पहली रिक्वायरमेंट है इस जनरल प्रिंसिपल में कि जो भी मेंबर स्टेट है जो इस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये जरूरी है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पॉलिसी में जो भी अपनी पॉलिसी बनाए, रूल्स बनाए, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। इसको किस लिए कि उससे जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको वो स्ट्रेंथन कर सके। And each member state must set its own priorities also for the protection of consumers in accordance with their social circumstances in relation to the economic circumstances or environmental circumstances as per the need of the country, as per the need of the population, as per the need of the development of that particular country. तो जब भी ये गाइडलाइंस बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो एज ए जनरल प्रिंसिपल ये कहा गया है इसमें जो गाइडलाइंस हैं कि जो स्टेट पार्टीज हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो अपनी इस चीज को प्रायोरिटी पर रखें जब वो रूल्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कि वो पॉलिसीज जो हैं वो लोकल कंडीशंस, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी जो चीजें हैं उनको दिमाग में रखते हुए, उनको अपने ध्यान में रखते हुए कि उनका कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, जो मेजर वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसमें किसको फायदा होगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉपुलेशन के लिए वो लॉ बनाएंगे। तो ये प्रायोरिटी होगी उनकी
स्टेट पार्टीज की कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पॉलिसीज बनाए. सो दिस इज द general statement of the guidelines. And at the same time, the guidelines general principles also provide certain intention that when the policies are to be made by the member state parties, then they must also consider in their priorities for protecting the consumer rights that access by consumers to the essential goods and services must be there. कि जिस तरीके से जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उसमें उसको एक्सेस मिले, उसमें उसको एंट्री मिले. वो किसी भी तरीके से जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो उसको किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना हो और हर किसी को इक्वल एंट्री और एक्सेस उसमें मिले. तो ये जो जनरल प्रिंसिपल है, that is the first pointer कि there must be equality in access by the consumers to essential goods and services. Then protection of the vulnerable and disadvantaged customers or consumers. ये भी अपने आप में एक जनरल प्रिंसिपल है कि कंज्यूमर कई बार ऐसा होता है दैट कंज्यूमर इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्मॉल पर्सन, and the companies and the manufacturers, they are owning a very big status in the society. उनके पास बहुत पैसा है, अगर कोई केस जाता भी है तो वो अपना बहुत बड़ा वकील खड़ा करके अपने फेवर में केस डिसाइड कर सकते हैं, जबकि एक छोटा मोटा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके पास इतने फैसिलिटीज नहीं होती हैं. तो इसलिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इसमें, उसमें जनरल प्रिंसिपल ये रखा गया है कि ये दिमाग में रखते हुए कि हमारा टारगेट ग्रुप कौन है, हमारे कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस की बात नहीं कर रहा है, ये हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो आइटम्स और गुड्स खरीदे गए हैं उनके लिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है. तो ध्यान में रखना होगा कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हर किसी को एक्सेस हो, और साथ ही साथ जो डिसएडवांटेज्ड कस्टमर्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं लोग, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उनके लिए कितना लिबर्टी देना है, कैसे लिबरल रूल्स बनाने हैं. जब रूल्स पॉलिसी बनाए मेंबर स्टेट तो इस चीज को भी वो कंसीडर करे. दैट हैज टू बी बेयर इन माइंड दैट the how to give the protection of the vulnerable and the disadvantaged consumers. Then the protection of the consumers from hazards to their health and safety. It has to be seen ki, what type of the manufacturers are producing the products, whether those are against the health safety of the consumers. So if it is like that, then protection has to be given to the consumers from those hazardous items which are against and which are not good for the health and safety of the consumer. Then also how to promote the and to protect the इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कि कैसे उनकी जो आर्थिक इंटरेस्ट है, हित हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे प्रमोट किया जाए. तो इस तरीके की पॉलिसी का भी बनाना स्टेट पार्टी को जरूरी है. देन access by the consumers to adequate information that can make them enable to informed choices according to the individual wishes and needs. कि ये भी जरूरी है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको पर्याप्त रूप से सूचनाएं मिले. सूचनाएं किस बारे में? सूचनाएं इस बारे में कि उनकी जो आइटम्स हैं, जो जो गुड्स बने हुए हैं, उसके चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं, वो क्या क्या चीजें एक जैसी हैं जिसमें कि उनकी चॉइस है. तो दे मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्फॉर्म्ड चॉइस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल विशेज एंड द नीड्स. की एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, दूसरे की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. सो दीज इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी forced information, but these information must be based on the choices of the individual consumer. तो इस पॉलिसी को भी देखते हुए नियम बनाए जाएं. Then consumer education which may include the education on the environmental, social and economic consequences of the consumer choices. कि कोई आइटम खरीदेंगे उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. So this is also required. So एक awareness type things is very important. Consumer education is very important as a general principle कि जब लॉ बनाया जाए, पॉलिसी बनाया जाए, तो उसको भी इसमें पार्ट
उसको वो इसमें ध्यान में रखते हुए इसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने लॉज में. Then at the same time, it also provides that there must be the availability of some effective consumer dispute resolution and redressal system. कि अगर लॉ तो बन गया है तो उसके बाद उसको रिड्रेस कैसे किया जाएगा, तो इफेक्टिव कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और रिड्रेसल सिस्टम भी होना चाहिए. ये उपलब्धता इसकी बहुत आवश्यक है. देन फ्रीडम टू फॉर्म द कंज्यूमर एंड अदर रेलिवेंट ग्रुप्स. ये जनरल प्रिंसिपल है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसी ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए ही ये प्रिंसिपल्स कुछ निकल कर आए हैं, जिसमें ये बात की गई है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, कोई ग्रुप्स बनाना चाहता है, तो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि दैट दे मे प्रेजेंट देयर व्यूज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस through the organizations or through the consumer groups. Then promotion of some sustainable pattern of consumption. This is also one of the important general principle which is the part of the guidelines. Then label of protection for the consumers who are using the electronic commerce like other form of the commerce. तो उनको भी कैसे इसमें प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इनिशियली मैंने बताया कि 85 में कुछ गाइडलाइंस आई, उनको एक्सपेंड किया 99 में, और उसके बाद 2015 में फिर से गाइडलाइंस आई. तो यू सी दी टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन 1985 टू 2015 कि धीरे धीरे किस तरीके से ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज बीन स्टार्टेड, ई कॉमर्स, ई परचेज, सब चीजें शुरू हुई. तो उसमें भी जो कंज्यूमर्स हुए उनको रेमेडी कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इन प्रिंसिपल्स में बात की गई है कि ई कॉमर्स इज नाउ एक्सेप्टेड फेनोमेना, और उसमें जो ई कॉमर्स में जो कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं उनको अगर रेमेडी चाहिए, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, so like other forms of the commerce, they should also be given the protection under these guidelines. So the protection of the consumers who are purchasing through electronic mode is also the part of these guidelines. Then the protection of the consumer privacy, because we know that there is a global market today बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स. तो किस तरीके से कंज्यूमर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, इसको लेके भी जनरल प्रिंसिपल्स इसमें बनाए गए हैं, सो दैट द ग्लोबल फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जब हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, तो उस इंफॉर्मेशन में जो प्राइवेसी है एक कंज्यूमर की, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट under these principles, general principles. Then, at the same time, the member states should provide or maintain the adequate infrastructure. Infrastructure just to develop and to implement and also to monitor the protection policies, consumer protection policies. कि केवल पॉलिसी बना देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि साथ ही साथ मेंबर स्टेट्स को ये भी देखना चाहिए कि जो कुछ पॉलिसीज बनी हैं, जो रेड्रेसल मैकेनिज्म बने हैं, वो एडिक्वेट हैं या नहीं है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेके डेवलप किया गया है, उसको देखना है कि वो एडिक्वेट है या नहीं है. जो मॉनिटरिंग करनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज की, उसको समय समय पर देखना है और वो मेंटेन हो रहे हैं प्रॉपर या नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं. सो the member states have the duty under these guidelines as a general principle that they should also provide how to maintain the adequate infrastructure in order to develop, to implement and to monitor the consumer protection policies. Then all the enterprises should obey the relevant laws and regulations of the countries in which they do the business. So it's not confined to the private business companies, but all enterprises, whether it's the state enterprises or it is the private enterprises, they have to obey. जो भी ये guidelines और जो law बनाए जाएंगे, जो भी regulations होंगे, उन सब को इनको obey करना है अपनी अपनी countries में, where they are doing the business. वो जहाँ भी business कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें follow करनी पड़ेंगी. Then at the same time, these general principles have also put certain responsibilities on the universities and on the public and private enterprises
कि ये जो पॉलिसी बनाई जाएंगी, ये जो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, लॉज बनाए जाएंगे फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, तो वो कैसे डेवलप किए जाएं। क्योंकि ये तो गाइडलाइंस की बात हो रही है जनरल प्रिंसिपल्स में कि ये जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो कंडीशंस को देखकर बनाई जाएंगी, वो लोकल नीड्स को देख के बनाई जाएंगी, वो कंज्यूमर के स्पेसिफिक डिजायर्स को देख के बनाई जाएंगी, उनके चॉइसेस को देख के बनाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ों की जो रिसर्च है वो कौन करेगा, कैसे बताया जाएगा कि what has to be done, what is the specific requirement, what are the special needs for which the policies are to be made. So for that, the general principle says that there is a potential positive role of the universities, and not only of the universities but the private and the public enterprises also in research, and their research should be considered when developing the consumer protection policies. So in that way, you see there are many of the universities, there are many of the projects also which are being completed in the name of the consumer protection rights and the protection of the consumer. Many of the universities, they are having the consumer chair also, बहुत जगह है। एनएलएस बेंगलोर की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनकी एक चेयर है जहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोफेसर अपॉइंटेड है, एंड दे डू सर्वेज, दे डू रिसर्च कि क्या क्या होना चाहिए, क्या राइट्स इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लॉ में कहीं कोई कमी है तो उसको कैसे अमेंड किया जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सो this all is being done as per the policies, principles which are the part of the United Nations guidelines for the consumer protection of 2016. Then in my next lecture I will be discussing with you some of the other pointers which are also the part of these guidelines, that is principles for the good business practices, the main guidelines, the international cooperation as well as the international institutional machinery. So here I stop myself. अभी आज अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, and I will be discussing the rest of the provisions in my next lecture. Thank you.